Yes, good morning. This is the sixth part of body fluids and circulation. Uh, in this part, we will cover about ECG, the double circulation, regulation of cardiac activity, and disorders of circulatory system. Now, let's start. This is the first topic, that is ECG. Now, what is ECG? ECG is electrocardiograph. And what is the function of ECG and how ECG is obtained? ECG is mainly involved in obtaining the functioning of हार्ट. मीन्स कैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हार्ट में रिलैक्सेशन हो रही है, आर्टीरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, डायस्टोल, ये सारा जो होगा वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा. ये एक मशीन होता है ईसीजी, उसके अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. और उसके लिए एक वेव बनती है, एक ग्राफ बनता है मशीन के ऊपर, और उस ग्राफ को हम ईज़िली देख के बता सकते हैं कि पेशेंट या कोई एक पर्सन कितना हेल्दी है या उसके अंदर कोई डिजीज़ है कि नहीं है. सो हम इस स्लाइड को देखते हैं. ECG is a graphical representation of electrical activity of heart during a cardiac cycle. Means during a cardiac cycle or during one heartbeat, what are the electrical changes are obtained. This is expressed with the help of ECG, a graphical representation. A patient is connected to the machine with three electrical lead. A patient is connected to the machine with three electrical lead, one to each wrist and to the left ankle. मशीन से 3 वायर्स आती हैं, थ्रू 3 लीड्स आती हैं जो उसके रिस्ट और एंकल में इंट्रोड्यूस की जाती है पेशेंट के. एंड दिस विल रेगुलरली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी. मीन्स ये जो वायर्स होंगी ये हार्ट बीट को मेंटेन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को. फॉर अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन or multiple leads are attached to the chest region. Sometime for detailed evaluation, more than 3 leads can be used. Yes, this is the graphical representation of ECG, and you can see the different type of waves in this diagram: the P wave, the QRS wave, and the T wave. The P wave represent the electrical excitation of arteria. Means here P wave represent the arterial systole. When both the arteria is in contracted state, then a wave is generated on the machine known as P wave. P wave हमें arterial systole के बारे में डिस्कस कर रही है, बता रही है. Then QRS wave. QRS wave represent the ventricle systole. You can see the QRS complex represent the depolarization of ventricle, which initiate the ventricle contraction. QRS wave represent the ventricle systole or ventricle contraction. And you can see after QRS wave there is a small wave known as T wave. T wave represent the ventricle relaxation. T wave represent the ventricle relaxation. So these complexes, the QRS complex, the P wave and the T wave, represent a complete heartbeat. Complete heartbeat. You can see, I am again repeating, P wave हमें arterial contraction के बारे में बता रही है, QRS wave जो होगा हमें ventricle contraction के बारे में बताएगा, और T wave जो होगा हमारा ventricle relaxation के बारे में, मतलब डायस्टोल सिचुएशन की हम बात करेंगे, डायस्टोल के बारे में हमें रिप्रेजेंट करेगा. इन केस इफ़ अ पेशेंट हैज़ द वेव्स इन इरेगुलर फॉर्म, देन द पेशेंट इज़ अफेक्टेड फ्रॉम एनी और फ्रॉम वन और मल्टीपल हार्ट डिजीज़. यस, नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? Heart contain 2 type of circulatory system: pulmonary circulation and systemic circulation. हमारा राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से ऑक्सीजन ऐड होकर वापस आता है कहाँ पे, लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है. और लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है हमारा बॉडी पार्ट्स की तरफ. ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज देयर.
when the blood move from pulmonary area or through lungs, this is known as pulmonary circulation. And when the blood move from organ area, organ system, then it is known as systemic circulation. The upper circulation in the figure is pulmonary circulation, and the lower figure is the systemic circulation. You can see through right atrium pulmonary circulation originate, and it will end into left portion, and through left ventricle circulation system originate, and it will move towards right. So let's read the slide. Pulmonary circulation, it is the circulation of deoxygenated blood. As we know, right portion contain deoxy blood. It is the circulation of deoxy blood from right ventricle through pulmonary artery to the lungs, and then oxygenated blood to the left atrium is known as pulmonary circulation. And in systemic circulation, it is a circulation of oxygenated blood from the left ventricle to the tissue or the organ where deoxygenated blood is collected and carried to the right atrium through vena cava. This is known as systemic circulation. So since two type of circulation is there, pulmonary and systemic, this is known as double circulation, and double circulation is clearly visualized in human. And there are special circulatory systems are also there, a coronary system and hepatic portal system. These are the special circulatory, you can say, system designed in our body. A coronary system is that system which supply the blood to heart itself, to heart muscles, cardiac muscles. And hepatic portal system is a unique circulatory system which circulate the blood between digestive tract and the liver. Hepatic word is for liver. So when the special liver circulatory system is discussed, then we named as hepatic portal circulatory system. Next. Yes, now regulation of cardiac activity. How heartbeat, how cardiac activity is regulated. Normally, normal activity of heart is regulated by there is a special you can say muscles or specialized muscles are present known as nodal tissues. That's why heart is known as myogenic. Means हमारा जो हार्ट बीट है वो हार्ट के अंदर से ही रेगुलेट होता है. हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जो हार्ट बीट को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट. दिस इज नोन एज मायोजेनिक हार्ट. A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function. मीन्स हमारे हार्ट में एक स्पेशल सेंटर होता है, हमारे ब्रेन में एक स्पेशल सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं मेडुला. मेडुला पोर्शन है हमारे ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लोंगेटा आता है. तो वो मेडुला पोर्शन के अंदर हमारी हार्ट बीट मेंटेन होती है, कार्डियक फंक्शंस मेंटेन होते हैं. सो अ स्पेशल neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac activity or cardiac function. And the neural signals means the messages through sympathetic nerve can increase the heartbeat. There are two nervous system in the body, the sympathetic and the parasympathetic. ये 10th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो हार्ट बीट को इंक्रीज़ करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज़ करेगा. फर्स्ट पॉइंट में मेंशन भी है. न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट. और ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होगा वो हार्ट बीट को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और कंडक्शन को भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा. सो हमारा हार्ट बीट स्लो होता है पैरासिम्पैथेटिक से, हार्ट बीट फास्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से. Now these are the disorders of circulatory system. First one is high blood pressure. This is known as hypertension. During contraction and relaxation, means during systole and diastole, the normal blood pressure is near about 120 by 80 mm of mercury. The value of 120 represent the systolic pressure and the 80 represent the diastolic pressure. 120 is systolic pressure and 80 is diastolic pressure. If the pressure is 120 by 80, then it is a normal blood pressure. But if the blood pressure is in between, if the blood pressure exceed through 120 by 80, then it is known as hypertension. And during hypertension, the blood pressure is above 140 by 90. So high blood pressure may be due to some, you can say, heart disease,
or maybe due to have some more cholesterol in the blood. Then next disease is coronary artery disease. It is known as atherosclerosis. This disease is caused by the deposition of calcium, fat and fibrous tissue. Means when the calcium, fat and fibrous tissue get deposited in the artery or in the space of artery that supply the blood to the heart muscles, then a disease is produced known as coronary artery disease. I am again repeating, आर्टरीज जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उन आर्टरीज के अंदर कैल्शियम और फैट का डिपोजिशन हो जाएगा. वो आर्टरी का एरिया जो डायमीटर होगा वो नैरो हो जाएगा और उससे जो डिजीज़ होगी उसे हम बोलेंगे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या एथीरियोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट इज एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस. It is a disorder that cause acute chest pain when there is no enough oxygen reaching the heart muscles. Means when heart muscles is not getting enough oxygen, then a pain is produced in the body known as angina. Next, heart failure or congestive heart failure. When heart is not pumping the blood efficiently, means when the pumping of blood and the pumping of heart is not efficient, then it is known as heart failure. Heart failure is differ from cardiac arrest and heart attack because during heart failure the pumping is affected, but during cardiac arrest heart stop beating. Means during cardiac arrest heart not beat, and during heart attack heart muscles is damaged by inadequate blood supply. So these are three different disorders having the different meaning. Heart failure is different from cardiac arrest and heart attack also. Yes, thank you. This is all about in this chapter.